Locked gates that keep people out. The blue paint peeling off the rusting bars. The walls so high you can't see where they end. Silver wires encircle white boundaries. Vehicles drive in and out of the compound. Into this world arrives Miss Shukla, walking past colourful flowers and trees, gently swaying under the mild December sun. The scene around her is in contrast to the beauty of the grounds. Men and women sitting in cells, tightly gripping the iron bars that separate them from the outside world. Suddenly, a whistle blows and the gates are unlocked. It is time for the head count. The prisoners form a queue. This is Dimapur District Prison, and Ms. Shukla is a master trainer at the USHA Silai School in Dimapur, the largest city in Nagaland. She was chosen to train 10 inmates from the prison and imbibe in them the necessary livelihood skills for life outside prison. As a human being, I don't know why they are coming here, but somehow if they learn these things, I think if they're going out for in future, they can do anything because they can settle their life in this training after getting certificates and all. So they have a knowledge how to stay, they have a basic knowledge, and after that I think they are going for advanced training also, and they can settle their life, they can start their new life here. मुझे पता है कि ऊषा ने रूरल इंडिया में बहुत सी जगह ये कुशलता के कदम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग दी है. सो हमारा एम्फेसिस ये था कि जो सोसाइटी के एक डाउन ट्रॉडन या आउटकास्ट लोग होते हैं उनको भी हम कैसे अपस्किल कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी कंसीव. फाइनली ऊषा वाज ऑन बोर्ड. वी थॉट दैट वी कैन train the women as well as some male inmates. If there are males who are wanting to undergo this training, why don't we take them on board? So along with this, हमने अपने कुछ 2-3 स्टाफ को ट्रेन करने की कोशिश की है जिनको हम in future master trainers की तरह यूज़ करेंगे. One such potential master trainer for the Dimapur prison is Staff Warden Krishna. Krishna's undying interest in stitching is commendable. He is not only upskilling himself, but also breaking several gender stereotypes in the process. He was eager to hand his wife a beautiful bag that he stitched during training, and has also been engrossed in sewing a vibrant pink curtain for his house. Krishna will be one amongst the prison staff who will further train the prisoners in sewing and stitching. हम तो कुछ भी मालूम नहीं था. बेसिक ट्रेनिंग में हम भर्ती हुआ तो हमको पहले सिखाया था जो लेडीज़ बैग होता है ना, लेडीज़ बैग पहले सिलाया. तो हम पहले थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो अभी थोड़ा फ्री हो गया तो हम बैग बना के बहुत खुशी मिलता है. We spoke to the inmates, we spoke to the ladies, and a lot of these ladies were involved in crimes, petty crimes, and even say drug peddling. So उनको समझाया कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ड्रग पेडलिंग करना नहीं पड़ेगा. Genuinely, honestly, आप अपनी you can earn a living for yourself and for your children and family members. So they were excited. Finally, it worked out. Everybody is on board now. The inmates are now trained enough to run a production center by themselves. After finishing their sentence, their skills will help them run a fully functioning production center where they can stitch uniforms for themselves as well as the prison's officers. I've learned how to stitch trouser and along with a formal shirt. Earlier, I've learned only the basic things which they were teaching me here. But after the USHA have come up with the training, USHA Silai School, now they have teach me how to do the embroidery works even, along with the cutting and all. Since we are in the prison, we are always in a block mind. But with all this training program, we'll get ourselves refreshed. And we are happy that
they are giving us this opportunity to learn all these things. Sanjana is accused of peddling drugs. She has a 5-year-old son and a daughter. Sanjana wants to start her life afresh once she has completed her sentence in prison. हम तो कभी बाहर में रहने टाइम में कभी नहीं सीखा, लेकिन जेल में आने के बाद में इतना कुछ सीखा। ड्रेस भी सीखा, सूट भी सिलाई मैम सिखाया हमको, और पेन भी डिजाइन सिलाई करने के लिए सीखा। और बाहर में जाने से भी ये सब करके लाइफ मेरा आगे हो सकेगा ना, इसलिए हम भी सिलाई करने के लिए भी इम्पोर्टेंट भावना बहुत करके सीखा। ट्राई करेगा बाहर में जाने के बाद में ना, ये सीखने के करने के लिए। रास्ता तो बाहर में जाने के बाद में सब हम तो जेल में आया, सब आदमी हमको देखने नहीं सकेगा ना, लेकिन ये सिलाई करके हम कुछ लाइफ मेरे लिए, मेरे बच्चा लोग के कुछ बनाना चाहता है। Reintegration in society is a major challenge for women prisoners. They could be either under trials or convicts, because once they go back to their own village, they are neither accepted by their own families, they do not get any kind of employment, and they also carry a social stigma along with themselves. Therefore, skilling them on sewing has given them an opportunity to earn a livelihood without actually being dependent on anybody else for employment. The ultimate aim of prison administration is to reform and rehabilitate offenders, and training by USHA master trainers is part of that. Some of the inmates in this prison have almost completed their sentence, while some are a few years away from it. But as long as they learn a new skill and put it to practice, there will be a different life awaiting them whenever they leave. A life of self-sufficiency and gainful employment. I really want to give them a message that life is so precious and they get such an opportunity here through USHA, so they can change their life after leave from here. They can change their life. At the Nari Niketan in Kota, a home for women in distress, eager steps trooping in for an unusual class. A stitching class run by a woman whose story in itself is an inspiration. Reena is 28 years old. She's been living in the Nari Niketan in Kota for 7 years, mainly because she has nowhere else to go. Reena was discovered on the road, abandoned and pregnant. The district administration sent her to the Nari Niketan. Reena is speech and hearing impaired. She could never communicate to the authorities where she came from and how she found herself in Kota, pregnant and alone, or whether she had any family at all. Perhaps it is Reena's way of forgetting a painful past. But with the USHA Silai School training, Reena has a new future. A future of hope, a future where she has been trained with a skill that gives her opportunities. A future where she can take care of her daughter, now 7 years old. रीना मेरे पास में वो ऐसे ही लावारिस अवस्था में घूमती हुई पुलिस को मिली थी, तो वो एडीएम साहब के ऑर्डर से मेरे पास में आई थी। शुरू में जब वो आई, उसने बेबी को यहाँ पे बर्थ दिया, प्रीतिका, वो भी यहीं बालिका गृह में ही रह रही है। और चूँकि लड़की टैलेंटेड थी, तो सचेतन के माध्यम से और भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू हमने इसको ट्रेनिंग करवाई। शी वॉज गुड एट ऑल, हर चीज़ फटाफट ग्रैस्प कर लेती थी। मीनवाइल मेरे पास में सचेतन से ये वाला ऊषा इंटरनेशनल के थ्रू मेंटर वाला जो प्रोग्राम है, इसके लिए प्रपोजल आया, तो हमने यहाँ भिजवाया इसको। इसने वो ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद में नो डाउट उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। Reena had basic sewing skills and she was a quick learner, and after getting special permission from the government, she was allowed to be part of the USHA RKCL Silai School Teachers Training Program for 9 days.
Now a master trainer herself, Reena began training other women, and with the help of the government and the officials at Nari Niketan, she started teaching other inmates of the Nari Niketan and the Balika Grahe how to stitch and sew. Despite being speech and hearing impaired, Reena acquired new skills and is also able to impart them to others. मैंने सीखा कैसे, ना तो सुन सकती ना बोल सकती, तो फिर कैसे सीखा, इशारों में कैसे सीखा। तू मुझे बोलेगी तो कैसे बोलूँ। ये यूँ कह रही है, मैं सुन नहीं पाती पर बोलने की कोशिश करती हूँ और इशारों में समझा सकती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और सीखी कैसे फिर? सीखी भी इसी तरीके से है वो, इसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, फिर जैसे जैसे सबका सपोर्ट हुआ तो इसको और लगन हुई, मुझे ये करना चाहिए, गाइडेंस करते रहे, भाई ये कर तू आगे, अगला काम तेरे को ये करना है। पहले से जैसे होमवर्क देते हैं बच्चों को वैसे सिखाते गए, इसको काम दे के जाए, फिर दूसरे दिन वापस से चेक करे इसका काम, भाई इसने कोई कमी होती है तो उषा मैडम वगैरह बताते रहते हैं। Reena earns a small income from the USHA Silai school. She plans to save that money for her daughter's future. तेरे पास पैसे आएंगे क्या करेगी तू? हाँ, हाँ, मैडम के पास जमा करके फिर अकाउंट खुला के उसमें करेगी, कुछ अपने बेटी के लिए रखेगी। Trainers from USHA and partners from the NGOs supporting them, like the Unayan Sanstha, say for the women of institutions like the Nari Niketan, having a skill and being empowered to earn even a small income goes a long way in their recovery and rehabilitation. यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं या महिलाएं आती हैं, वो हम देखेंगे अमूमन कि एक ऐसी जगह है जो समाज से कटे हुए हैं, परिवार से कटे हुए हैं। जब यहाँ पर वो रहते हैं तो मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, कह सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता उनमें। तो इसका क्या किया जाए? तब किया कि हमने कि उषा सिलाई स्कूल के साथ उनको जोड़ा जाए। उषा सिलाई स्कूल में सिर्फ सिलाई का ही काम नहीं है। उषा सिलाई स्कूल में हम सिलाई के माध्यम से उनको एक आत्म भरोसा, आत्मबल देने की बात होती है। जब किसी के पास स्किल होगा तो आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा तो वो आगे के लिए अपने जीने की राह को बेहतर कर पाएंगे। हमारा मानना ये है कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के हर हिस्से को छुआ जाए, हर हिस्से को पिन पॉइंट किया जाए। इस बार नारी निकेतन इसलिए चुना क्योंकि नारी निकेतन में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं आती हैं और उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रोजगार जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस खुशी देती है। नारी निकेतन जैसी जगह या नारी निकेतन जैसे इंस्टीट्यूट जो लोग काम कर रहे हैं, जो सालों से समाज में अलग तरीके की जनरेशन वहाँ आती है, अलग तरीके के लोग वहाँ आते हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमने स्किल को चुना। जो सिलाई स्कूल में जो स्किल दी जाती है सिलाई की, वो हम लोग देते हैं। उसको देने के साथ उनमें जो कॉन्फिडेंस आता है वो उनको उनके पुराने दुख दर्द भूलने में मदद करता है। Reena's students are also happy working with her. Her speech and hearing disability is not a barrier. In fact, she communicates with them perfectly and teaches them by demonstration. तुम रीना से कैसे सीख पाते हो? क्योंकि वो सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, लेकिन वो तुमको कैसे सिखाती है? क्योंकि वो निशान लगा लेती है और खुद की सोच के दिमाग से लगा लेती है, फिर हमको बताती है इसे करना है और ऐसे सिलाई करना है, ऐसे बताती है। किस तरह में से बताती है हमको, इसको सही कर देना, कैंची से काट देना। हमने बैग सिलाई सिखाई थी और पर्स बनाने सिखाई थी और मास्क बनाने भी सिखाई थी, सब सिखाई थी। The women under Reena's guidance make a variety of items from bags to jewelry, masks and other knickknacks. The Nari Niketan has tied up with an NGO to design and market these.
The focus is on reusing waste and recycling it. एक्चुअली जो भी कुछ सामान बनता था तो इनिशियली हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था कि इनका एक क्वालिटेटिव इंगेजमेंट हो, तो उस तरीके से हमने शुरू किया था। धीरे धीरे वो सामान बनने की, वो प्रोडक्ट्स बनने की जो थी स्पीड भी बढ़ती गई और बहुत सुंदर और सफाई से काम जो था वो सामने आने लगा, बच्चियां ज़्यादा जुड़ने लगी। तो हम लोगों ने अपनी एनुअल एग्जीबिशंस के थ्रू उनकी मार्केटिंग करना शुरू किया। Reena may be speech and hearing impaired, but she has skills and dexterity that few others possess. A winner of many yoga competitions, Reena and her daughter have made the Nari Niketan their home, simply because they have nowhere else to go. But with the USHA Silai School training, Reena has taken one step into an outside world. Godavari from Gorakhpur in Uttar Pradesh has been associated with USHA Silai School for the last 3 years. The training she received there has helped her develop a skill which completely changed her life. A large part of the training was delivered through the USHA Silai app downloaded on her phone at the Silai school. Though she was new to the app, Godavari was quick to figure it out and then use it to her advantage. मुझे इसमें सबसे अच्छा फ्यूचर ये लगता है कि इसमें मैं कितने आसानी से रख के कटिंग कर पाती हूँ। कटिंग जैसे कि मतलब कैसे उसको मतलब वो बनाना होता है ना, जैसे कि कटिंग का फार्मा बनाना है, फिर कपड़े को रख कर समेट कर कपड़े को कैसे रखा जाता है और रख के उसको कैसे कटिंग किया जाता है। ऐप मेरी बहुत सिलाई में मदद करती है। वीडियो खोल कर पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद उसमें बताता है तो उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। कितना आसान है, मतलब ऐप यूज करना कितना आसान है कि मतलब सही बात बताइए, थोड़ा मुश्किल होती है या आसान? आसान है, ऐप से देखने से आसान होता है। The app is very informative for someone who's still learning how to sew, and it's easy to use too. महिला का करेंगे। The videos explain concepts, processes and techniques with instructions and language that are easy to understand. इस ऐप को जब हम चलाते हैं तो उसमें देता है कि मतलब आप मशीन कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने कपड़े को कटिंग कर सकती हैं। तो हम उसमें जो बताता है हम लोग वही करते हैं। और मशीन को भी जैसे चलते चलते जाम हो गई मशीन तो उसको नीचे का शटल हम लोग खोलते हैं और खोल करके उसको साफ करके फिर उसमें तेल उल डाल करके फिर कस के फिर चलाते हैं। जैसे उसमें ये भी मिलती है जानकारी कि इस मशीन का क्या नाम है और इस मशीन में कौन से पार्ट पुर्जे हैं, इन सब के बारे में भी बताते हैं। The app is not just for women being trained by the USHA Silai schools. Anyone can download the app on their smartphone and sharpen the sewing and stitching skills. USHA launched the USHA Silai mobile app to provide ready and easy content to rural women so that they could learn sewing sitting in their own house in the village itself. The app has content which covers various aspects of sewing, like how to make garments for children, women, men, and even accessories. It also covers aspects of general sewing theory and also various aspects of machine repair and maintenance. The app is available on Google as well as Apple Store, is available in 12 languages and is absolutely free of cost for everyone. The Silai app has truly been beneficial for women like Godavari, but its impact goes far beyond, as Godavari is now also helping other women learn those same skills. इस समय मैं उषा सिलाई ऐप को मैं 10 से 15 बच्चों को ऐप लोड करवा चुकी हूँ, क्योंकि जो बच्चियाँ आती हैं सीखने सबके पास तो इस मोबाइल रहता नहीं है बड़ा वाला, सबके पास छोटा ही होता है। जिनके पास बड़ा वाला मोबाइल है मैं उन सबको उषा सिलाई ऐप लोड करवाती हूँ, तो वो लोग आराम से कर लेते हैं। Like Godavari, the USHA Silai app has helped several people across India with sewing techniques. You can too download the app and develop a new skill.